Gujarat. In a controversial move that's likely to be challenged in courts, the Town Planning Committee of the Ahmedabad Municipal Corporation has announced a controversial decision. They say stalls selling non-vegetarian food will not be allowed on public roads or in a 100-meter radius of schools, colleges and religious places. The decision was announced by the chairman of the Town Planning Committee, Devang Dani. The authorities meanwhile say that this isn't about vegetarian or non-vegetarian food, but about ensuring that stalls don't obstruct traffic flow. Now, this is the latest controversy. What we're also learning is that the Gujarat Chief Minister has come out and said that this is in a bid to stop traffic disruption and people are free to eat what they want. तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी। बाद में धार्मिक प्लेस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉल है, उसके आसपास भी 100 मीटर के दायरे में भी एक स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव था। वो ठहराव 100 मीटर के अंदर नहीं रह सकते। तो इस मुताबिक आज की टाउन प्लानिंग कमेटी ने एक निर्णय किया है कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी इंडा, आमलेट, नॉन वेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। कल से अहमदाबाद टाउन प्लानिंग की टीम एक्शन में आई जाएगी और ये तात्कालिक निर्णय लिया गया है। अब क्या होगा, हम लोग के रोड पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, हम लोग को ये पेट भरता है, उसी से रोजी चलता है। अभी मियाँ बीवी कहाँ से हम लाएंगे, खिलाएंगे? अभी हम लोग कहाँ से खर्चा उठाएंगे? बोलता लारी बंद करो, दुकान चालू करो, ऐसा थोड़ी होता है। दुकान भी बंद करा दो, फिर एक रोजगार बंद हो जाता है हमारा, तो मतलब तकलीफ तो होता है। लेकिन पहले बोलना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं मत लगाओ यूँ, तो हम मतलब नहीं लगाते। तो ये मतलब डायरेक्ट उठा लिया लारी, तो मतलब उनको बोलना तो चाहिए ना पहले यूँ। गवर्नमेंट को क्या जो भी डिसीजन निकालना चाहिए, या बंद या फिर चालू, कुछ तो डिसीजन देना चाहिए ना। अंडे की लारी बंद करो यूँ, लेकिन ये तो मतलब हमारा तो ये सैंडविच का है लारी, वो भी मतलब कुछ बताया नहीं और भर दिया सीधा। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चलाकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। तो फिर ये लोग आप निर्णय कुछ निकालिए या धंधा करवाइए, नहीं तो कहीं जगह दीजिए। Saurabh Gupta joins us with the very latest. Saurabh, what more can you tell us about this move? On the one hand, you have the chairman of the Town Planning Committee very clearly coming out and saying that non-vegetarian food particularly is the problem here. It shouldn't be allowed within a radius of schools, colleges and religious places. The Gujarat Chief Minister now has come out and clarified saying this is to manage traffic and has nothing to do with food choices. Well, it's quite bizarre that, the Town Planning Committee chairman, what he says. Now, one can understand a reasoning of, banning, say, tobacco products within a radius of, several schools and all. Those kind of regulations already exist. But to say that non-vegetarian, products that are being sold on, trolleys, on basically non-vegetarian food items like omelette and, other stuff that's sold in these trolleys not being allowed is bizarre. Now, of course, the Chief Minister says this has got nothing to do with food habits. But this also, remember, comes on a day when the Supreme Court also pointed out how housing societies were, it was impermissible for them to stop people from, with different food habits to be living in a society. All of this is, at this point, it seems unconstitutional. It seems bizarre, even with the Chief Minister's clarification. The fact is that if at all action has to be taken against, food carts or trolleys, then whether they are selling non-vegetarian food or vegetarian food cannot be a criteria. And that's what several people have pointed out on social media. Now, if it's about removing illegal, say, food trucks or food carts, then again, what they sell is not the issue. The fact is that they're illegal. But the chairman, Town Planning Committee chairman here clearly says that it's about non-veg food. So he's obviously imposing his, perhaps a certain choice of food on others who may be perfectly fine with non-vegetarian food. And that's the argument that's being made on social media. And obviously, the matter is likely to reach courts, and it will be interesting to see what the courts say, because this is clearly, seems bizarre to start with, if not illegal. Right. Saurabh, thanks very much for joining us with the very latest. We'll keep a close watch on those developments.